Hello, students, and welcome. This is Jyoti Rajput, and today's topic is beekeeping equipments. मतलब कि हम बात करने वाले about the equipments which are used in the apiculture. So बहुत सारे equipments हैं जिनको use किया जाता है. So that is why the beekeeping it is a commercial unit of apiculture. But in India, there is lot of lack of knowledge of the apiculture in Indian people. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सो फेमस एपिकल्चर जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है क्यों क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसके बारे में इसके नॉलेज के बारे में अवेयर नहीं है बट द एपिकल्चर इन वेस्टर्न कंट्रीज इज़ वेरी फेमस इट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर हैविंग द नॉलेज अबाउट इट तो हमारी कंट्री में नॉलेज है रिलेटेड विद द पोल्ट्री फार्मिंग वर्मी टेक्नोलॉजी सेरिकल्चर पिसिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सो नॉलेज है इसीलिए इसको एज अ प्रोफेशन यूज करते हैं and it is a profitable profession. So here the because of the people they are not familiar with the technology which are used in beekeeping किस तरीके का मैनेजमेंट होता है beekeeping में इसका नॉलेज नहीं है that is why in India it is not so popular. सो जब हम कुछ फिगर्स को देखते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है हमारे इंडियन पीपल को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हियर वी शुड स्टार्ट विद द एपिकल्चर ऑल्सो एज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तो जब हम यूएसए में देखते हैं कि देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ हनी इज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ बी वैक्स इज प्रोड्यूस और इस तरीके से बहुत ज्यादा इनकम हम एपिकल्चर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम विद द ऑस्ट्रेलिया जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हनी एंड बी वैक्स और वो भी बहुत अच्छी मोटी कमाई कमा सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट इज एपिकल्चर तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि वी कैन ऑल्सो स्टार्ट द एपिकल्चर. So here I'm going to talk about the scientist that is Langstroth, L. Langstroth. In 1851 उन्होंने जो है बी बॉक्स जो है इन्वेंट किया था. So that is why we call them Langstroth box. So here he found the particular space which should be present between the combs which it in the hive. So the bee space of the size is 0.62 to 0.92 centimeter, which is seen between the combs which is present in the artificial hives. So ये जो space है, it allows the free movement of the bees and encourages them to construct the comb. सो अल्टीमेटली मेन एम क्या है हमारे बी कीपिंग का कि सो दैट वी कैन ऑब्टेन मोर एंड मोर हनी एंड वी कैन ऑब्टेन मोर एंड मोर बी वैक्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म. सो हियर इन इंडिया कुछ ओल्ड मेथड्स हैं जो यूज किए जाते थे बाय द एपिकल्चरलिस्ट by the old apiculturalist the old methods were used and by this method only they were able to extract the honey and bee wax. So बहुत ही crude method था बहुत ही cruel method था unplanned method था to extract to obtain the wax and the honey. तो जब से हियर द बी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में इस्टेब्लिश हुआ है तो ये जो रिसर्च है इट हेल्प्स टू नो द नॉलेज रिलेटेड विद द बी कीपिंग सो इस तरीके से अब पीपल जो है नाउ दे आर मोर अवेयर अबाउट द बी कीपिंग हाउ इट शुड बी डन किस तरीके से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और जिसके वजह से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. सो कुछ ओल्ड मेथड्स भी हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे which are the modern methods which are used in nowadays. So because of this we are able to obtain more and more wax and the honey. तो काफ़ी लोग हैं जो कि बी कीपिंग एज अ करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच पीपल कैन स्टार्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड और इस तरीके से द एपिकल्चर इट कैन बी स्टार्टेड बाय एनी वन बाय एनी इंडिविजुअल इफ दे आर हैविंग द नॉलेज एंड दे आर विलिंग टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोफेशन. सो बी कीपर्स जो हैं इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग हनी कोम्स एंड वैक्स. सो हनी जो है आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है मोर देन ऑयल ऑल्सो. सो ओनली द कंट्रीज हु एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आर वेल वर्स्ड एंड द इक्विपमेंट्स विद एडवांस टेक्निक्स आर एबल टू प्रोड्यूस हनी. सी हनी जो है कब प्रोड्यूस होगा when there is huge amount of flowers in the surrounding. इसका मतलब establish agriculture भी और horticulture भी दोनों ही establish होने चाहिए तो वहीं आसपास ही जो apiculture है वो start किया जा सकता है because honey bees they are completely dependent on the flowers और flowers कैसे मिलेंगे by the agriculture establishment.
तो हम बात करेंगे कुछ ओल्ड मेथड्स, कुछ primitive methods, or you can say some indigenous method. So there are two types of hives which are used in indigenous method: wall fixed hive and movable hive. First we'll talk about the wall, or you can say fixed hive. So it is completely purely natural type of comb which are constructed by the bees. So it is called as hive, and they are always present on the trees, on the walls, and here you will see some entrance, and also you will see some holes for the entry and exit of the honeybees. Next we are going to talk about the movable type. Here, these movable type, ये जो हैं, they are made up of basket, or they may be made up of empty boxes. Here in this figure, you can see hollow logs हैं, okay, जो कि construct किए जाते हैं by the humans. Bamboo भी use किए जा सकते हैं, reeds और mud pipes or earthen pots, they are being used and placed in the verandas of the houses. सो इस तरीके से हेयर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं द hollowed logs, and inside now the honeybees are going to construct the comb. So there are two holes present. एक होल एंट्री के लिए होगा और दूसरा होल जो है वो एग्जिट के लिए होगा फॉर द honeybees. And these types of hive, they are the one which are going to protect the honeybees from the rain, from the sun. So ये indigenous method of beekeeping, but it is having number of drawbacks. Okay, जो कि इसी के वजह से ज़्यादातर साइंटिस्ट इस तरीके के रेकमेंड नहीं करते एपिकल्चर को स्टार्ट करने के लिए. हेयर ऑल्सो यू कैन सी हाउ द combs are being constructed in the hollow wooden logs. सो इन द इंडिजिनियस मेथड, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले बी को जो है किल किया जाता है, और इस तरीके से जो है जो हनी बीज है, शी इज एबल टू एस्केप फ्रॉम द हाइव. तो वी यूज सम स्मोक, ओके, सो दैट द हनी बीज दे कैन एस्केप फ्रॉम द हाइव. And now here, because of the help of smoke, we are able to prevent, we are able to remove the honeybees from the hive. और ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा नाइट के टाइम पे किया जाता है. एंड देर आर नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, इसीलिए इसको एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसके नज़रिए से नहीं देखा जा सकता. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हनी अगर करना है तो ये इंडिजिनियस मेथड जो है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. And here this method, it is having number of disadvantages. First of all, जो honey है, so honey को हम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर एक्सट्रैक्ट करते भी हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लार्वी, प्यूपी और पोलन सेल्स प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे. एंड हेयर जब भी हम ऑब्टेन करते हैं हनी को, सो कॉलोनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. कॉलोनी जो है मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके, जब भी हम हनी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉलोनी कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और इसके लिए जो है ज़्यादा एनर्जी भी लगती है हनी बीज को दोबारा हाइव को बिल्ड करने के लिए. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इतना भी ह्यूमन को सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि कंप्लीटली कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर दें फॉर ऑब्टेनिंग द वैक्स एंड द हनी. इसलिए इंडिजिनियस मेथड जो है हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते किसी भी एपिकल्चरलिस्ट को. सो नाउ इट इज इंडिजिनियस मेथड इज नॉट यूज्ड. सो इस तरीके से जो है हमारा वीडियो भी खत्म होता है. एंड हियर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.